फंडामेंटल्स की बात करते हैं। हमारे साथ निखिल कामत जुड़ रहे हैं, को फाउंडर ऑफ ट्रू बीकन एंड ऑफ कोर्स ये जो एक पीएमएस फर्म है, जेरोधा मेन कंपनी भी है उनकी। निखिल, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ईटी नाउ स्वदेश पे आने के लिए। आज मैं आपसे बाजार के बारे में सब्सिक्वेंटली बात करूंगा। सबसे पहले एक पीस ऑफ रिसर्च जो बाहर आई है उसके बारे में बात करूंगा कि इंडियन हाउस होल्ड एक्सपोजर इक्विटीज की तरफ वो एक ऑल टाइम हाई पे आ गया है 4.8% पे, करीब करीब 5%। ये करीब 4.5% से नीचे था लास्ट ईयर माफ कीजिएगा, और ये साल दर साल बढ़ता हुआ हो रहा है। जबकि अभी भी डोमिनेंट एरियाज जो है एक इंडियन हाउस होल्ड लगाता है, प्रॉपर्टी में 49% एक्सपोजर है, एफडीज और गोल्ड में 15% है। लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि ये ट्रेंडिंग अपवर्ड्स है। आप फाइनेंशियल मार्केट्स में काफ़ी टाइम से हैं, आप इतनी बड़ी फर्म संभालते हैं, आप किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस डेटा को? क्या ये लगता है ये सस्टेनेबल फिनोमिना है जो शुरू हो गया है, या ये सिर्फ बाजार अच्छा हुआ था, वाइब्रेंट हुआ था तो ज़्यादा एक्सपोजर हो गया था? क्योंकि नेसेयर्स ये भी बोलते हैं बाजार अच्छा था तो आ गए इन्वेस्टर्स, जब बाजार खराब होगा तो ये वापस चले जाएंगे। इस पूरे मैटर पे आपका क्या व्यू है? मैंने ये रिसर्च पेपर देखा नहीं है जहाँ पे 4.8% बोल रहा है। हिस्टोरिकली अगर आप देखिए तो इंडिया हैज बिन अराउंड 2.5-3%। अगर आप इसे वेस्ट के साथ कंपेयर करें, से डेवलप्ड कंट्रीज, वहाँ पे ये नंबर है 40-50% के ऊपर। एक चीज हो सकती है कि एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, द रिपोर्टेड नंबर आज, इवन इफ इट इज 5% टारगेट इन्फ्लेशन, प्रैग्मेटिकली ऑन द ग्राउंड इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा लग रहा है। और अगर लोग इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए इक्विटी में आ रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ होगी। जस्ट इन टर्म्स ऑफ स्केल, अगर LIC के 35 करोड़ 35 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स है हमारे देश में, तो देयर इज नो रीजन व्हाई इक्विटी मार्केट्स के सिर्फ 5 करोड़ या 6 करोड़ इक्विटी ओनर्स होने चाहिए। I think the trend is a good thing. In terms of taxation, और अगर आप पिछले 10 या 20 साल की रिटर्न्स देखें तो इक्विटी में लोगों ने लगभग 10-11% a year consistently in the last 20 years. They've made it through the wonders of compounding. So I think it's a good thing, and I think this trend should continue. As the middle class grows in India and people become more savvy in terms of having bank accounts and having access to equity markets, I think it will continue for a long time, and that 4-5% number will probably eventually match the number in the Western countries that we see today. काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, और ऑफ कोर्स ये जेफरीज की रिपोर्ट है जो ये डेटा मैप करती है बहुत ही क्लोजली। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा नियर टर्म इशू है, और वो नियर टर्म इशू है कि नाउ दैट अभी वॉर का जो मामला है वो धीरे धीरे इन द प्राइस हो गया है, बाजार प्री वॉर लेवल से वापस आ गए हैं। अब स्टैगफ्लेशन का जो नया इशू है, जैसे बाजार में बोलते हैं कि मार्केट फाइंड समथिंग टू वरी अबाउट एवरी नाउ एंड देन, तो ये स्टैगफ्लेशन का जो मैटर है कि ग्रोथ एनेमिक रहे और इन्फ्लेशन स्टिकी रहे, ये इक्विटीज पे कैसा असर डाल सकते हो? ये कितनी बड़ी चिंता है आपके हिसाब से ये इशू? Well, इन्फ्लेशन जनरली एक चिंता है, जितनी लोगों को हो रही है शायद उससे ज़्यादा होनी चाहिए। We were doing some research around how much inflation changes for every $10 spike in crude oil. जो हमारी इन्फ्लेशन टारगेट है, that has been taken, the 4.5-5% which RBI has. In that they have considered oil price around 70 to 75. आज आप सोचिए तो prices are closer to 110-120. If the prices were to go to 150-160, inflation number, the target will become very hard to achieve. जब भी inflation हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, the only tool we really have at hand is to reduce liquidity from the economy. So if we were to increase interest rates to counter inflation to above 8-9%, wherever inflation might go tomorrow, growth definitely slow hoga. And then for a period of time, maybe we will have stagflation because growth will come down because of higher cost of money, and inflation will remain high for a while. But I think this can be modeled in as well, and in some ways, many people are already factoring this into their investing strategies. अगर
If you ask me for a candid opinion about what I think, inflation is a big issue. I think the trade deficit that we are filing on every month is another big issue. Geopolitically, I don't think जो भी हमने रशिया यूक्रेन में देखा है, we have factored in everything. I think there is plenty more to come. But the biggest thing I worry is, steel prices are up 60%, crude is up 100%, all commodities like nickel, aluminum, everything has rallied. But the margins of the companies which create end products using these same commodities, the margins have not gone down yet in the numbers. One assumption can be, it's a lagging indicator and it takes about a year for these companies to reflect lower margins. जैसे आप real estate का example लेंगे, तो real estate companies के लिए in many ways this is a huge inflow, right? This is one of the core dependencies they have, commodity prices. But real estate companies के margins हमने कम होते हुए देखे नहीं हैं. मेरे ख्याल में वो होगा, शायद 6 महीने के बाद होगा या 1 साल के बाद होगा. Considering the geopolitical tension, considering trade deficit, considering where crude oil is today, अगर आप मुझे पूछे कि market 17,200 पे fairly valued है, मैं अपने this is just my view, but I think markets are expensive today. And even though we all talk like there has been a big correction, अगर आप numbers देखें तो we rallied 100% to reach 18,400, and we have corrected maybe 7-8% to be at 17,200. In any other time, if something goes up 100% and comes down 7-8%, that would be nothing. But हम लोग ये छोटे वाले correction को, we are treating it like it's a real big correction and acting like stock prices have corrected and normalized. But मुझे लगता है कि markets अभी भी expensive हैं. People should be cautious. Follow the age-old rules of being diversified enough, having other asset classes in your portfolio, not taking on more risk than one should today. Market looks cautious to you, Nikhil. Morning, Priyanka here. लेकिन ये कॉशियसनेस अगर नंबर्स के लिहाज से देखें, बेटिंग मोर ऑन स्टॉक ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स, तो वो शायद नहीं देखते. अब हालांकि पिछले हफ्ते की न्यूज़ है कि बीएसई ने जो अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स का जो मार्क है वो 10 करोड़ पार कर लिया था. और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, महाराष्ट्र और गुजरात तो लीडिंग स्टेट्स हैं ही इन कंट्रीब्यूटिंग टू दिस नंबर्स, बट स्टेट्स लाइक असम, लक्षद्वीप, बिहार, इन्होंने ज़रूर सरप्राइज किया. ऐसे कोई स्पेशल ट्रेंड्स जो आपको दिखे, जो आप कोई स्पेशल फैक्ट हमारे साथ हाईलाइट करना चाहें यहाँ? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इस हद तक बढ़ गया है. If you look at the last couple of months, we have seen the highest unemployment ever in many years in India. ये जो हम unemployment rate calculate करते हैं 8-9%, we don't add people who are under the age of 15, we don't add people who are over the age of 60. इसका definition काफी microscopic in a way है, जहाँ हम बोलते हैं कि educated people willingly looking for a job and stuff like that. अगर आप इसको 8% मान भी ले तो it's very disparate across the country. In Karnataka, for example, it might be 2-3%. In Mumbai, it might not be too much. But if you go to a Punjab and Haryana, it might be 20-25%. To a lot of people, trading and investing did become a hobby, a crutch, alternate way to earn income during the pandemic because normal jobs were not happening. But I think the key that is being lost here is if you're an investor, you should be doing it for the right return expectations. If your investing capital is 1 lakh rupees and your monthly expenses are say 10,000 rupees, investing से आप 10% a month consistently आपके कमाने के odds बहुत ज़्यादा कम है. I don't think you should even attempt it. When you come into the market with expectations like that, more often than not, you'll end up taking on too much leverage or doing more risky things than one should be doing and lose the capital. So trading में इस unemployment rate से क्या correlation है exactly I cannot draw, but
I think it has played a part in getting more people onto investing platforms, which is not a bad thing as long as people remain prudent, follow risk mitigation methods, and try to build portfolios for long-term gain, but not to try and make that monthly income out of investing. निखिल, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप ETNow स्वदेश को समय दे रहे हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग ज़ीरोधा ने सर्विसेज दी हैं, वो ये दी है कि आप अपना टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वो जो एक फीचर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। खैर उससे काफ़ी हद तक CA के ऊपर जो डिपेंडेंस है, या CA को आप खुद बता दीजिए हमारा इतना लॉस एडजस्ट कर लो आप उसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ मेरे को आपसे ये पता करनी थी, LIC का IPO इस फाइनेंशियल ईयर में तो अब नहीं आएगा। 25 तारीख हो गई, 31 तारीख को हो जाएंगे बुक्स क्लोज। अब आएगा ये अगले फाइनेंशियल ईयर में। जब ये अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगा तो ये मार्केट के लिए क्या होगा? ये एक जैकपॉट होगा, ये मार्केट के लिए एक लिक्विडिटी सकर होगा, ये होगा क्या? ये मुश्किल है टू कॉल इट 1 year ahead in time, बट अगर मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो द लास्ट लार्ज कंपनी दे डाइवेस्टेड, IRCTC, उन्होंने अंडर प्राइस किया था, एंड दैट इज फ्रेश इन देयर मेमोरी कि दे issued an IPO at a certain value, and the value of the company now is significantly higher than that. So I don't think they will be too pessimistic when it comes to filing LIC's IPO, just by virtue of the previous experience they've had. That being said, आपको ये देखना पड़ेगा कि what price band it comes in, what is the incentive for LIC policy holders to apply. You'll have to look at the minute print around the document before you can figure out how much demand there might be. But मेरे ख्याल से it's also a factor of where the markets are at that point. If the markets are robust and rallying, like somebody was asking me earlier in this interview, when things are going well, appetite is high. Now at this current juncture, if there was to be an IPO which comes out, you have Paytm IPO, Zomato and Nykaa ka, memory in your head as a retail investor. You have all these political and, like fundamental economic problems that we discussed earlier in the interview. So I think that might weigh a little bit more on people's mind than what LIC could be doing in itself. I think right now people are, talking about that Ruchi Soya IPO, and there's a lot of banter on it. I think it went live yesterday, right? So we're watching how things develop there. इस समय मार्केट के एनवायरनमेंट में जिस तरह से फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं, अर्निंग्स के ऊपर मार्जिन प्रेशर का क्लाउड्स, मैक्रो क्लाउड्स, ओनरशिप में रिटेल काफ़ी एक्टिव है, FIs चले गए हैं, ये सारे एलिमेंट्स को देखते हुए नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स अपने पोर्टफोलियोज में अल्फा जनरेट करना काफ़ी ट्रिकी हो सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से हमेशा ट्रिकी होता है अल्फा जनरेट करना। इफ यू वर टू टेक अ बेंचमार्क, अगर आपका बेंचमार्क द निफ्टी है फॉर एग्जांपल, निफ्टी इज अ इंडेक्स वेयर कंपनीज आर आल्सो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, राइट? इट्स बेस्ड ऑन मार्केट capitalization. That is a very efficient way to track the growth story of the country in a way. So to beat that and get an alpha versus that index, in my opinion, is really hard. अगर आप alpha against a bank FD की बात करें, or if you talk about alpha against corporate debt, for example, that might be more achievable than trying to get alpha over Nifty. Because Nifty has, like we were talking, done 11% a year in the last 20 years. How can you have a better investment than that? All right, thanks very much निखिल, आज आपने समय दिया और ये सारे व्यू हमसे शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए